Okay, so in this video, what we're going to be discussing about renal tubular defects. First of all, Fanconi syndrome. So what happens is in Fanconi syndrome is that the proximal convoluted tubule is affected. In proximal convoluted tubule, most of the reabsorption basically occurs. It is regarding sodium. Alongside with that, there's going to be the absorption of bicarbonate, amino acids, glucose, you know, and bicarb as well. So what happens is that is going to be, it's not just about one specific transporter, by the way. It's overall generalized reabsorption problem. Now also you need to know that this is type 2 renal tubular acidosis. We are going to cover the types of renal tubular acidosis in the next video. So now that we know that proximal convoluted tubule is not going to be acting, which means sodium is not being reabsorbed. Now when sodium is not being reabsorbed, you have aldosterone. Aldosterone level is going to be increased due to the RAS system, angiotensin activating system. So what happens is that this aldosterone is going to be acting on the collecting duct, and it's going to lead to the reabsorption of sodium and is going to cause secretion of what? Potassium and hydrogen ion. Technically, it has to be hypokalemic and metabolic alkalosis, but it's going to be metabolic acidosis. Why? Because you cannot reabsorb bicarb as well. So, because bicarb is not being reabsorbed, this is the only condition which is going to be metabolic acidosis with hypokalemia. Now, phosphate is also not being reabsorbed. We have talked about sodium not being reabsorbed, glucose not being reabsorbed, amino acids, bicarb, and phosphate. Now, hypophosphatemia means that ATP production would also decrease. Alongside with that, mineralization of bones is going to decrease. So, when there is poor mineralization, if it's present in a child, it is going to present with what? Rickets. If it's going to present in adults, it's going to be present with osteomalacia. Now, when does Fanconi syndrome actually mainly occurs? So there are going to be multiple hereditary defects. Wilson disease, which is related to copper, tyrosinemia. Then there's going to be glycogen storage diseases, ischemia, multiple myeloma. There are certain drugs, for example, ifosfamide, cisplatin, tenofovir, and lead poisoning. So there are few which could be showing up, like for example, lead poisoning, Wilson's disease, multiple myeloma, along with that cisplatin and all of that. So now whenever there's going to be a condition regarding hyperphosphatemia, osteomalacia, osteopenia, volume depletion as well, amino aciduria, the question is going to be regarding this. So for example, there's going to be glycosuria with normal glucose, right? So why with normal glucose? Because sodium wasn't being reabsorbed. Now there is no driving force which is going to cause reabsorption of glucose. So when there's going to be no reabsorption of glucose, even though it's within the threshold value, it's less than 200 milligram per deciliter, still it's going to be presented with glycosuria. So you're going to be getting a question in which they will tell you that this glycosuria, sodium levels have dropped, hypotensive, metabolic acidosis, and hypokalemia, bones aren't being properly mineralized. So that's your Fanconi syndrome. Now there's Bartter syndrome. What is Bartter syndrome? So in Bartter syndrome, what happens is that reabsorption defect in thick ascending loop of Henle, which mainly reabsorbs 2 chloride alongside with that sodium and potassium. So now sodium and potassium are not being reabsorbed. Sodium not being reabsorbed means that aldosterone level is going to increase, which is going to cause secretion of what? Potassium and hydrogen outside the body, leading to metabolic alkalosis and hypokalemia. So you have metabolic alkalosis and hypokalemia. Now we also know that the potassium used to go back and causes basically moves back into the apical side, and the positive charge of potassium is going to cause the movement of magnesium and calcium to be getting reabsorbed in the basolateral aspect. So now if potassium is secreted out, this means that hypomagnesemia and hypocalcemia. So in Bartter syndrome, you're going to see that calcium is going to be present in urine. This is an autosomal recessive condition, and so is the Gitelman syndrome. How are you going to differentiate between Gittel and Bartter? First of all, let's see what Gitelman syndrome is.
दैट इट इज़ रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल विच इज़ अगेन कि सोडियम नहीं रीअब्जॉर्ब हो रहा. अगेन वही सेम चीज़, एल्डोस्टेरोन बढ़ गया, हेल्प हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. लेकिन आप बार्टर और किटलमैन को कैसे करोगे? किटलमैन जो होता है वो कम स्वेयर होता है बार्टर से, दोनों में हाइपोकलीमिया, दोनों में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, दोनों में सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ रहे हैं. लेकिन बार्टर में आपके पास कैल्शियम लेवल भी बढ़ रहे हैं. कैल्शियम लेवल जो है वो यूरिन में ज़्यादा जा रहा है. क्यों? क्योंकि कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा. गिटलमैन में सिर्फ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन का मसला था. यहाँ पे हाइपोमैग्नीसीमिया है, यहाँ पे क्या है, हाइपर कैल्सियूरिया, कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नीशियम कम हो रहा है बॉडी के अंदर. गिटलमैन सिंड्रोम को आप कंसिडर करो एज अ क्रॉनिक थायराइड डायूरेटिक, क्योंकि उसमें भी आपके पास डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल पे सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाती थी. बार्टर को आप करो क्या, आपके पास क्रॉनिक लूप डायूरेटिक दे रखा है आपने. नाउ व्हाट इज़ लिडल सिंड्रोम? लिडल सिंड्रोम होता है कि आपका जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक्सेसिव अमाउंट में होना शुरू होती है इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. लिडल इज़ ऑल अबाउट ऑटो एंड इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट. ओनली डिजीज़ विच इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट इज़ लिडल. और ये गेन ऑफ म्यूटेशन हो जाता है लिडल के अंदर, और सोडियम बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है. तो जब सोडियम बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाती है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है. अभी साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे प्रेजेंट करी होगी कि ओ अच्छा हमारे पास एल्डोस्टेरोन शायद ज़्यादा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तभी हमारे पास प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में या सेकेंडरी भी एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है. तो उसमें सोडियम की जो होती है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास हाइपरटेंशन हो जाती है एंड पोटेशियम लेवल्स कम होना शुरू होते हैं. अब क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो उसके साथ क्या होता है, जब भी सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो पोटेशियम बाहर निकल रहा होता है, उसकी वजह से आपके पास हाइपोकलीमिया आ जाएगा. इसमें भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाएगी. सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल कम होगा क्योंकि उसको कुछ नहीं करना पड़ा सोडियम को बढ़ाने के लिए. लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट विच इज़ सेम सिंड्रोम, इट इज़ सिंड्रोम ऑफ apparent mineralocorticoid excess. So what happens is कि आपकी बॉडी में एंजाइम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज. 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज जो कॉर्टिसोल को कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फॉर्म में जो कॉर्टिसोन होती है. कॉर्टिसोल बीइंग कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिसोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट नहीं देती, बट जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिसोल जाकर मिनरलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर्स पर बाइंड कर जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास एक्सेसिव वही अगेन सेम चीज़ सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, पोटेशियम बाहर निकल जाएगा. इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट आप इस तरह कर सकते हो कि आप सबसे पहले दे दो एज ए पोटेशियम स्पीरिंग डायूरेटिक इसके अंदर दे देते हैं जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के इफेक्ट को कम कर देगा. ठीक हो गया. दूसरा आप काम क्या कर सकते हो कि इसमें सबसे पहले वो दिया जा सकता है एक्सटर्नली स्टेरॉइड्स दे दें. अगर आप एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स दे दोगे तो बॉडी तो कॉर्टिसोल को मतलब प्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो जाएगा. अब बीइंग ऑटोसोमल रिसेसिव कैन एक्वायर डिसऑर्डर फ्रॉम glycerinic acid present in licorice which blocks activity of 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase. उसने कहा कि अगर कोई लिकोराइस ले रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वेट, अगर कोई लिकोराइस ले रहा है तो वो भी सेम साइंस एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी हो, क्योंकि उस लिकोराइस के तो क्या होता है कि वो ब्लॉक कर देता है एक्टिविटी को 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजनेज की.